Okay, fine. In this case study session 2, we will be dealing with the theme of keywords. How these keywords, while reading the ethics, while reading the newspaper, you should just grab it, that how it is going to help you. Okay. So just let me know when my screen share. I will be sharing screen from different device. I hope my screen is visible to all of you. Yes, sir. Thank you. So first, I will start with the keywords approach. Okay, then we will solving the case study. So it will take just like 5 to 10 minutes only, not more than that. Okay, if you look from the perspective of keywords, I have already given certain headings. Say it is environment. Okay, when we talk about the environment, care, how does the care value through environment you can observe and show? Can anyone tell me over here? How environment shows care as a nature, as a output? Yes, Srividya. Sir, in terms of nurturing and in terms of showing empathy towards the other biodiversity, other Fine enough. species. Fine enough. Yes, Subhanshi. So the four different kind of services that environment provides, sustenance and provisioning, and all those four categories, they are representative of showing care. Okay, fine. So I will just write one word. I hope you all have read that in your PMF IS or Sankar IS, whatever you have followed. Ecosystem services, correct? Whatever comes under the same, it is like a care kind of nature. And whatever you guys have told, it is completely correct as well. Justice, environmental justice, intergenerational justice, as we have in last session discussed about the sustainability and all. Okay, intergenerational parity, when we talk about equity and all. Okay, now we have a special duty towards the nature because it cannot speak directly. Why I have written this particular quote? This can be your conclusion as well. Okay, this can be your conclusion as well. For example, if you're getting any say case over the environment, you can conclude with these. Why you need to be more concerned towards earth, environment, or whosoever it is. Even this quote can be quoted in the context of person with disabilities as well. Okay, we can special duty towards person with disability because we can make them able. It is not like they were born with certain limitations. We don't have enough infrastructure and all to make them to enable them for the work they are capable of doing. Okay. Next, similarly, if you're talking about individual capacities, societies, what kind of values you should use? Leadership, you can use big names. I said celebrity kind of people over here. Okay, interpersonal competence. This is a word, very umbrella word, I will say. It involves active listening, teamwork, responsibility, motivation, patience. If you find these words in your answers, in your case studies, you can 100% be sure that your case study has GS4 orientation. No need to worry about it. Okay, fortitude. Fortitude again a keyword. Individual से relate कर रहा हूँ मैं इसको. Okay, courage of conviction. It's not like that whatever section A words you have used, you cannot use. Suppose your superior is not showing interest in investigating the case that, yeah, in the previous class we were doing. So the person or say department head showed courage of conviction, prepared extensive report. Okay, this way you can utilize your section in knowledge in your case studies.
you will be writing n number of words while answering the section A questions. However, same is not found in your case study answers. That's why you lose your marks. Okay. When I say character is something वो कहते हैं ना इसका character बहुत strong है. Similarly, strong, weak, rare, etc. Different types of characters. So a person is showing some kind of like he was bullied by the society and he gave up weak character, or pressurized by the politicians, he gave up weak character. Similarly, we can, even if we say na that district magistrate should show strong character, वो अपने आप में एक कीवर्ड हो गया ethical terms में. It is like we do not use even these words while answering the questions. Okay, so motivation, Sam Manekshaw. I just gave an example. Social skills, what are the components? Influence. I'm not talking about the Insta influencers. ठीक है, मतलब उनका भी है ही, ऐसा नहीं है, वो mention मत करना बस case study में. ठीक है, you can say why Swachh Bharat was a hit due to the our Prime Minister's appeal or the kind of influence he holds among the public. ठीक है, leadership, developing others, even this is a kind of social skill. Conflict management, दो लोगों की लड़ाई हो रही है, अगर आप चुप करा सकते हो तो that is for sure a skill. Goldman, again, just to give a theoretical outlook. I will talk more about the thinkers while solving the case study from I will in the third session. Okay. Social awareness components, empathy means you are aware what is happening around you. That's why you can show. Service orientation, again given by Goldman only. These four words are nothing but components of emotional intelligence given by Goldman. Self-management, components, self-control. Okay, adaptability, Goldman. Self-awareness, self-confidence, self-assessment, again given by Goldman. Now, social influence, how you influence the society. Three ways. Conformity means whatever is happening in the society, you conform to the same. For example, this road will be taken by the privileged section only. You are influencing the social rules, social laws, na? Yes, privileged section भी exist करता है एक society में. Okay, fine. Compliance. Again, whatever has been said, you are just complying. Obedience, same. Swachh Bharat is the one of the example. You will find everything over there. Here you will be having legal, sometimes moral. Okay, this is your individual. Sorry, individual, moral, and compliance is about society level. Obedience when the legal angle is there. So that's how you should differentiate different keywords as well. Okay, self-control, persuade, social management, nudge, trust. Now within the trust we have components. What kind of components? Integrity, dependability, competence. Okay, so you have the integrity, trust will increase. If people are dependent on you, it means they trust you. Competence, all their problems. If you are worthy of something, only then the people will trust you, na? Similarly, patience, bravery, perseverance, emotional maturity. Any keyword, if you are not getting, just raise your hand and ask your doubt. Okay, now feminine character. Even yes, Srividya. Sir, can you please differentiate between the difference between persuade and nudge? Okay, so persuade is actively doing something. Nudge is just creating the environment. Okay, so persuade is something you just do it once, you will like it. Persuade, nahi, you means actively pushing for something. Nudge is even a simple behavior. Nudge economics, just create the environment and people will start purchasing it. Yes, sir. Got it, sir. Thank you. Okay. Okay. So when it comes to the care, loyalty, responsibility, self-sacrifice, peace, woman. So if your case study has a woman character, don't you think you can use these keywords in some way or another?
But what happens actually, we do not know whether these keywords exist or not. This is the main issue. Sir, a friend is in waiting room. Wait a minute, yaar. That's why I said. Thank you, whosoever it was. So you can ask a treat by your friend, na, from your friend. Justice, autonomy, fair play, square deal, rule of law. These are the main characteristics. Okay, manly characteristics. So don't you think if a character is man, you can think of whether justice is there, whether autonomy is there, whether fair play is there. Okay. So suppose in the previous case, can we use fair play? Yes, whether all the bidders or all the options were equated equally, or that particular Gram Panchayat deal was made favorite. In such way, you have to think in the case study. Purpose of my sessions are not to equip with the knowledge. You all have good enough knowledge. If not, then you will read, you will get the knowledge. Whether to apply that knowledge, how to incorporate that knowledge in your answer sheets. That is my purpose. Okay, now wisdom, temperance, courage, justice. Okay, so we used to say without ticket का justice मिला है उसको, ठीक है? So just to get it like W without ticket, courage, justice. TC ticket. Okay, Plato, whether you can use the same. Adcom, this is the word you will find in your newspapers or non-UPSC books. If any one of you is vivid reader, you will find attitude, ethics, and communications. So if you write that Adcom is a leadership value, then you define what is attitude, what is ethics, and communication. These three words itself will help you to deal with the situation in n number of cases. Okay, tolerance, endurance, humility, modesty, altruism, emotivism, fatalism, social fabric, social order, social validation. What is social validation? The things that we do to get validation in the society. Okay, social intelligence. What is social intelligence? Can anyone try? What is it? I'm asking for try. See, if you don't want to make this session participative, do let me know. I will just skip. Yes, Subhanshi. There are different types of intelligence, like emotional intelligence. I just raise your hands. Don't do this, yeah. Subhanshi. So being aware of how the social fabric is around us and trying to apply our skills accordingly. How it is different from the emotional intelligence then? Sir, it's a specific component of emotional intelligence. Like emotional intelligence, it's a subset of that. Okay, fine. So I'm asking about social intelligence, Alok, not validation. Okay, the ability to get along the people somehow, to some way it is correct. Okay, I will say. Okay. Yeah, Kanik. So utilizing social skills more effectively. Good enough, good enough, good enough. You are near to the perfect answer, I will say. GP. Sir, I think it is the ability to manage, navigate social situations. Yeah, somehow similar thing. Okay, so to utilize your social skills to get the desired result is the social intelligence. Okay, even Baghdadi is a socially intelligent people. Even the people, those who are going with the de-radicalization things, even they are the socially intelligent people. Okay, fine. Social accountability, social engineering, social isolation. Now these words I don't think you will find in any notes. But if you target your newspaper reading, you will find it there. Okay, so now my hint was towards how to read newspaper from the ethical point of view. Just look at the some अतरंगा सा word दिख गया, अरे ये कहीं यूज होगा क्या एथिक्स में, नहीं घुसा देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं.
ठीक है. When talking about the governance and corruption kind of case studies, and this PDF I am using for the particularly the case studies, but it will be equally applicable in your section A as well. ओके, सेक्शन ए में भी जेनरिक आंसर आ रहा है गवर्नेंस में क्या लिखे, तो ये सारे कीवर्ड्स आपके दिखेंगे तो वो आंसर एथिकल बन जाएगा, GS4 टाइप का बन जाएगा. नो नीड टू वरी ओवर इट. ठीक है. यस कर्तव्य. सर ये न्यूज पेपर से कैसे कनेक्ट करने हैं इन वर्ड्स को एक बार दोबारा बता दीजिए. सेशन के एंड में याद दिलाना, रिकॉर्डिंग बंद करके बताता. ठीक है. Okay. So ART, I always remember them together. Art means accountability, responsibility, transparency for me. Reason for the same, when I draw this diagram, either in ethics, either in GS2, either in GS3, whichever subject it is. Okay. Accountability, responsibility, and transparency all are interconnected. You can prove one from another. Transparency है तो accountability बन जाएगी. Transparency जो दिखा रहा है उसको अपने वो responsible है. That's it. Okay. And a vice versa. So these kind of diagrams can be used in your case studies as well. Okay. बीच में मान लो बोल दिया उसने DM Purnia Bihar. So yes, so it means DM Purnia Bihar has to take all the three things into the mind while answering. Then you can start the answer. That how accountability, responsibility, transparency has been while choosing the course of action or whatever it is. Okay. Participation. Just एक एग्जांपल लिख दिया, सबका साथ सबका विकास. परफेक्ट. Openness, probity, honesty, truthfulness. Now if you look at these words, these are nothing but closer to the synonyms of each other. So that's what I said when you said that वो repetitive हो रहा है. मैंने अगर ऊपर वाले में truthfulness यूज किया तो मैं honesty यूज कर लूंगा ना नेक्स्ट केस स्टडी में, डिमेरिट मेरिट में. क्या दिक्कत है? नहीं होगा रिपीट. Integrity, similar. Justice, distributive justice, where socio-economic both are the present. Grievance redressal mechanism, GRM अपने आप में एक ethical चीज है. If you are having an institution and you are thinking about the redressing of the grievance, this is one of the nicest thing as an institution you can do. Okay, am I clear? Fine. Now strategic thinking, even that is an ethical thing. Why? Long-term objectives. शॉर्ट टर्म में फ्री बी कल्चर, रेवड़ी बांट दो, बिजली फ्री, पानी फ्री, देन यमुना का पानी भी फ्री. दैट हैज हैपेंड इन दिल्ली. ओके. एंटिसिपेट रिस्क. नाउ व्हेन आई से एंटिसिपेट रिस्क, यू आर जस्ट ट्राई टू थिंक कि मतलब अब कहां से जा रहा है वर्ड. एंटिसिपेटिंग रिस्क, इट मींस अ पर्सन इज गोइंग इनटू द फ्यूचर. ओके. Scenario planning, I'm giving you word which has not been mentioned in this PDF, so you can note it down over there as well. Scenario planning, आपने different scenario plan किए. Now in which scenario I will take the action? Riot होने वाला है, ये होने वाला है, तो you will be planning with the different scenarios. आप अपने मन में different roles तैयार करोगे. Graded action plan is nothing but scenario planning. When you go into the big public policy schools like IIM, Harvard and Wharton and whatever it is, you will find these words only. थोड़ा बढ़ा चढ़ा के. I was fortunate enough to get some classes in some esteemed institutions. तो बस वही बता रहा हूँ और कुछ नया नहीं है मेरे पास भी. ठीक है. Scenario planning आ गया. तो अब again a simple word, foreseeability. दूर तक का देख पा रहा है, दूरदर्शी वो इंसान है. Long term objective, anticipating, ये सब आपस में रिलेटेड है. Strategic thinking में ये सब कंपोनेंट होंगे. So suppose what course of action as a DM you should take? DM should take following. Okay, I'm not writing full word, I'm just giving you how to go for the case study. Should take following strategic decisions, long term objectives. Okay, risk, रिजल्ट, अडेप्ट. चाहे तो अब टेबल भर दी मैंने उस हिसाब से, या डिफरेंट हेडिंग्स बना के इनको लिख दिया. दैट्स व्हाट वी हैव टू डू. ओके.
Now consensus builder. Consensus builder, again participation, stakeholder, all are the similar kind of words, na? Ownership of performance means you are taking the credit. तो अगर कुछ fault हो रहा है, कुछ कहीं default हो रहा है, even there you will be taking credit of the failure. That's how leaders are born and made. Okay, so when you are taking ownership, accountability, responsibility. Okay, you say just how the words are interrelated. But हो क्या रहा है, हमें वहां पे तो बैठ के हम सोचते हैं अगला point दिमाग में आ जाए. We are not thinking what next should be in our mind because of our previous writing, whatever we have written. Okay, result oriented. Being result oriented is the ethical thing, na? You cannot experiment with the money of public. DM के पास जो पैसा है उसके बाप का थोड़ी है यार, public का पैसा है. So can DM experiment with his decision? No. So result orientation चाहिए. Performance culture. When I say culture, it means influencing others as well. ठीक है. Proactive, being innovative, public good. When I say same public good, अपने आप में ethical चीज है. Education, health, and whatnot. Okay, greater good. You know that which philosophy it is. I will not comment. Utilitarianism. Okay, IEC. This is अपने आप में एक word नहीं है, ये अपने आप में एक concept है. Information, education, communication. Informed education, communication is nothing but communication is nothing but, let me write, capacity building. So if you make a person or teach a person how to fish, then you need not to give him a fish every day, na? Similarly, so you are making him aware. Okay, with this, I guess this PDF is done from my side. Before I start case study, okay, just let me know if any one of you have any kind of doubt. Okay, then because I will be directly jumping to the case study. This was the second session and the most important session. Any doubt? If no doubt, just type something in the chat box. Yes, Subhanshi. Sir, so this list of keywords, what would be a good way to learn all of them? Like directly mugging up would not, No. like we'll not be able to implement them in a good way. Okay. So fine. What happens when I used to solve the case studies? You know that these keywords I gave 30. Anyone can give you 400 as well, and you will be amazed. What a kind of person! 400 keywords. I will clear ethics from these 400 words. But that will not happen. So in such scenario, what you have to do, just solve the case. See, these case studies, these practices, these tests are meant to do n number of mistakes. इतनी गलती कर दो इन टेस्ट वगैरह में, इतने घटिया मार्क्स आ जाए, चाहे वो मेंस में ना गलती हो, बस दोबारा इतनी गलतियां कर दो, मतलब गलतियां खत्म हो जाए हमारी सारी की सारी. तो when you solve the way you should, but before solving, read this booklet. Do not go more than 50-60 words, because once you get into the मतलब डाटा कलेक्टर बन जाओगे ना, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नहीं बनोगे. मार्क माय वर्ड्स. तो ठीक है, डीसी बनना है अपने को, लेकिन डिस्ट्रिक्ट वाला. तो डेटा कलेक्शन में नहीं जाना. ये 30-40 वर्ड है ना. अब इससे जैसे मैंने काफी सारे वर्ड्स मैंने कहा इसमें मेंशन नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ. इट इज लाइक ब्रेन स्टॉर्मिंग. ओके, वो अपने आप निकल रहे ना हमारे दिमाग से. सिमिलरली व्हाट वी विल बी डूइंग, कि निकलने दो. ठीक, ये सिर्फ एक पीडीएफ है, मान लो इसमें 10-15 वर्ड ऐसे ऐड कर ले जो बहुत ही उम्दा मिल गए आप लोगों को. Just add them and read before attempting the case. Read it. Okay. Then attempt the case. Then look at your case study. Is it good or not? अच्छा ठीक है. नहीं है, कुछ लगा कि मिसिंग है क्योंकि आपने दोबारा एक कीवर्ड्स देख लिया, कुछ देख लिया, तो जो मार्जिन में एग्जामिनर ने दिया है ना कमेंट, उसके मार्जिन में एक अपना कमेंट का सेक्शन भी बना लो. बस वहीं मेंशन कर दो कि यहाँ पे ये कर सकती थी, यहाँ पे ये कर सकती थी. Believe me, when you attempt next test and just look at this copy, you are going to minimize your mistakes. That's my word. मतलब इसकी मैं गारंटी ले सकता हूँ.
Fine. Subhanshi, I hope the process is clear how to utilize this. Okay, fine. Yes, Kanik. सर ये जो कीवर्ड्स है, वैसे मेनली ज्यादातर कीवर्ड्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, बट कुछ कुछ कीवर्ड्स जैसे अगर जो मुझे लगता है कि थोड़ा सा क्या मुझे उसे एक्सप्लेन करना चाहिए या एज एग्जामिनर पे छोड़ दूं कि यार नहीं नहीं तो पता होगा डायरेक्ट। नहीं, जो आपको लगता है कि एक्सप्लेन करने लायक है तो उसे एक लाइन में लिख दीजिए ना, उस पर थ्योरी मत लिखने लगिएगा। बस केस स्टडी में थ्योरी लिखने लगोगे तो हो गया काम फिर। हाँ नहीं, बट सर जैसे आपने पिछले क्लास में जब एग्जाम्पल बता रहे थे तो आपने गोल्डमैन का यूज किया था, तो ऐसे ऑथर वगैरह तो एक एक लाइन मतलब गोल्डमैन और उसका सिर्फ ब्रैकेट में काम चलेगा, उससे रिलेटेड उसका वर्ड वहां पे ब्रैकेट में गोल्डमैन लिख दिया, मोर देन इनफ। तुम बता रहे हो कि ठीक है, वहां पे एग्जामिनर जो बैठा है वो बेवकूफ नहीं है। ठीक है सर। बिलीव सर में और पढ़े एक लिखे और लोग हैं वहां पे। ठीक है सर। सर एक और चीज, जैसे कल की केस स्टडी जो पर्सनल मतलब लाइफ वाली थी, उसमें मेरे को ये था कि मेरे को सोसाइटी के एग्जांपल्स भी आ रहे थे, जैसे न्यूक्लियर फैमिली से दोबारा कन्वर्जन ऑफ जॉइंट फैमिली हो रहा है और ये सब वगैरह। तो सर अगर इस टाइप का एंगल आए तो मतलब डाल दूं ना, मतलब क्या मतलब हाँ, एथिकल। सर्टेनली, लेकिन ओवरडू मत कर देना किसी भी चीज की। यस सर। Fine. Okay, sir, while writing keywords like justice, temperance, courage, etc., is it necessary to write thinkers names like Aristotle, Plato? See, I will say don't overdo, but in a case study, 2-3 thinkers will not be overdoing of something. So 2-3 thinkers along with their concept, it is completely fine, and it will provide ethical orientation to your GS4 answer. Okay, rather than general. For example, अभी जब हमने बात किया वहां पे विजडम, टेम्परेंस, करेज, जस्टिस, तो वहां पे प्लाटो लिख दिया था ना बगल में, तो चलेगा एक दो जगह। ठीक है, बट ये भी नहीं है कि अब हर पॉइंट में ये एक थिंकर आ रहा है, दैट इज नॉट द केस स्टडी वे। बट यस, इन अ केस स्टडी 3-4 थिंकर्स एंड ऑल, ठीक है, चलेगा। अब अभिराज, ये तो मैं कहूंगा कि इसके लिए तो आपको गूगल करना पड़ेगा थोड़ा सा, ऐसे नहीं बताऊंगा। Okay, so I hope my screen is visible to everyone. सर एक क्वेश्चन था। हेलो। हाँ, हेलो। कर्तव्य। हाँ सर, जैसे कुछ टॉपर्स की कॉपीज मैंने देखी थी, उसमें वो लोग थिंकर डालते हैं, पर थिंकर के साथ उसकी ऐसे कभी बुक डाल दी कि उसकी बुक में भी ये था लिखा हुआ। तो सर अगर थिंकर डालना है तो मतलब जरूरी है कि बुक डाले उसकी, या मतलब बिना बुक के अगर भी काम चल अगर जाएगा? वही मैंने बोला ना, कंसेप्ट जब मैंने बोला, दैट्स व्हाट आई मेंट, इट्स कंसेप्ट। अगर आपको बुक याद आती है तो बुक भी डाल दो, कोई इशू नहीं है। ओके सर, ओके सर। फिर हो सकता है उसकी स्पेलिंग कुछ गलत इधर उधर कर दी होगी, मैं देख लूंगा, लेट मी गेट इट, मैं बता दूंगा उसका, ठीक है। बाकी आप प्लेटो का वो जो 4 वो हैं वो पढ़िए तो ज्यादा बेटर रहेगा, मैं उसमें डीप जाना नहीं चाहता वरना वो लेक्चर हो जाएगा फिर एथिक्स का। ओके, नाउ कमिंग बैक टू आवर बिजनेस आफ्टर 30 minutes. Okay, so give a quick read. I will be just giving a quick read along with you. So in this session, I really want कि मेरा role कम हो and you guys end up solving this case study. Okay, the private hospital is renowned for its operational efficiency. ठीक है, तो काफी माना जाना है, पहली चीज। Why am I underlining this? I am looking at their ethical perspectives. Although privately owned, okay, I will read. Many of you might be listening me, na. Although privately owned, the hospital operates on the cooperative model, fostering a sense of ownership among its employees. The hospital employs approximately 700 personnel who have voluntarily chosen not to unionize. Keyword है ये. Yes. One morning, a group of 40 individuals affiliated with political party forcefully entered into the hospital premise. Demanding employment opportunities, they resorted to threats, offensive languages, and intimidation towards both the hospital management and the employees. It became apparent that these intruders sought to secure jobs within the hospital. Okay.
while maintaining their political affiliation. The hospital upholds high standards of integrity and impartiality, avoiding favoritism. Avoid अब मैं अंडरलाइन नहीं कर सकता, मैंने वहां पे क्रॉस लगा दिया है. Towards any external entities, including civil administration and law enforcement agencies. ठीक है. Similar incidents have been observed in the public sector organizations as well. Ab, before coming to the questions, because I want you guys to answer this question. Okay. मैं सिर्फ केस स्टडी डिकोड कर रहा हूं, बिकॉज एक दो सेशंस में मैं ये करूंगा. थर्ड सेशन ऑनवर्ड्स आई विल ट्राई नॉट टू डू इट. प्राइवेट हॉस्पिटल बहुत फेमस है, ठीक है, एफिशिएंसी है, ट्रांसपेरेंट है, प्रैक्टिसेस है, कमिटमेंट है, एम्प्लॉय वेलफेयर के बारे में सोचता है, इट्स कंप्लीटली फाइन. कोऑपरेटिव मॉडल, what does it mean? I should be clear while solving the case studies. It will help me to generate 1, 2, 3 keywords. Can anyone tell me what is it? What do you understand by the cooperative model? Now we have cooperative ministry under Amit Shah sir as well, so you can tell me, I guess. Sir, it works on consensus of different people. Okay, Suvanshi. So the stakeholders that are there are also receivers of the facility. Okay, Kanik. हाँ सर, the similar lines कही है कि तो the receivers and the have part they are all are involved in the service also. Almost clear, I guess. ठीक है, जो भी आप लोग लिख रहे हैं almost clear, so I'm moving forward. तो आप लोग जो बोल रहे हैं ना, ये याद रखिए, इसका कीवर्ड्स है, नोट कर लीजिए. अगर अब ये आपके मुंह से नहीं निकला तो फिर क्या बोलूं यार मैं. ठीक है, निकलना चाहिए मतलब आंसर में भी ना, जब पता है हमें चीजें. One morning, a group of 40 individuals miss one thing. Voluntary choose not to unionize. Voluntary choose है तो voluntary वो choose भी कर देंगे कि unionize हो जाए तो कोई बुरा नहीं है. Unionism इस क्वेश्चन में नेगेटिव दिखा रहा है, बट नेगेटिव होता नहीं है वो इतना. ठीक है. One morning, a group of around 40 individuals affiliated to a political party, किसी political party से affiliated हैं वो लोग, ठीक है, वो एंटर करेगा हॉस्पिटल में, डिमांडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. फर्स्ट थिंग, व्हेन यू आर सेइंग दैट एम्प्लॉय वेलफेयर एंड ऑल, अगर आपके हॉस्पिटल में कोई एम्प्लॉयमेंट मांग रहा है एंड यू हैव द वैकेंसीज, तो इसमें गलत क्या है? पॉलिटिकल एफिलिएशन है, ये गलत हो सकता है. ठीक है, बट एट द सेम टाइम जब हमारा माइंड ये वर्क कर रहा है कि वहां 700 लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, क्या वो हॉस्पिटल के बाहर पॉलिटिकल एफिलिएटेड नहीं हो सकते? इट माइट बी अ केस दैट दे टू आर aligned with certain ideologies and political ideologies while performing their duties in the hospital. So it might be a case कि ये 40 लोग मान लो जो आए हैं एम्प्लॉयमेंट लेने के, इसमें 5 से 10 लेते हैं अगर हम, तो ठीक है यार, हॉस्पिटल के अंदर नहीं करेंगे हम पॉलिटिक्स. इट डजंट मीन ना. आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिमूव बायसेस दैट यू हैव. कनिक, कोई क्वेश्चन है क्या? No sir. ठीक है, तो पहला बायस मैंने क्लियर कर लिया. द बायसेस द वे आई एम क्लियरिंग, इट विल हेल्प यू इन सॉल्विंग द केस एज वेल. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ओके. थ्रेट्स, ऑफेंसिव लैंग्वेज, दिस इज समथिंग सीरियस. हाउ टू कंट्रोल इट? ओके, नाउ वो हॉस्पिटल के प्रीमाइस में भी है, हॉस्पिटल के प्रीमाइस में आपके स्टाफ भी है. इफ आपके स्टाफ को कुछ होता है, देन यू आर नॉट वेलफेयर ओरिएंटेड, तब आप भूल जाइए. ठीक है. It became apparent that these intruders sought to secure jobs within the hospital while maintaining their political affiliation. ये इशू है, डील कर लिया. Hospital upholds high standards of integrity and impartiality and avoiding favoritism. Okay, हम कुछ नहीं करेंगे, तो ये चीज तो मेंटेन करनी है हमको, क्योंकि दिस इज समथिंग गुड. अब मेरा दिमाग कहाँ चलता है, ये तीनों चीज कैसे मेंटेन हो सकती है? By ensuring merit. When you ensure merit, it means you are impartial, you are not showing favoritism. That's why you are maintaining your integrity.
again I'm using the same kind of terminology as thought process that I use for the art. Remember that triangle. जो भी कर रहा हूँ बहुत साइंटिफिकली कर रहा हूँ और उसका एप्लीकेशन सिखा रहा हूँ आप लोगों को. किसी भी वर्ड का मतलब, किसी भी थ्योरेटिकल थिंग का समझाने का मेरा पर्पस नहीं है. केस स्टडी कहीं से भी आ जाएगी, सॉल्व कर दोगे, 110% है. कितनी भी लंबी आ जाए, टाइमली हो जाएगी सॉल्व. टुवर्ड्स एनी एक्सटर्नल एंटिटीज. ठीक है, अब ये होता आ रहा है. नाउ assuming you are CEO of the company, what would you do to diffuse the volatile situation on the date of gate crashing with the violent mob sitting inside the company premise? One by one, I want answer from your side. आप लोगों को नहीं पार्टिसिपेट करना, I will make it one sided. मुझे बड़ा मजा आता है एक साइडेड लेक्चर लेने में. अभिराज. Sir, through dialogue. Okay, one thing, dialogue. Kanik. So firstly, ensuring safety of the staff and उसके बाद मतलब present with the mob to discuss their grievances. हाँ इधर देख लेते हैं ना और क्या क्या. अरे विराज म्यूट कर लो यार, बारी खत्म हो जाए तो. ओके, कात्यायनी. Sir, Kautilya's principle of Sam, Dam, Dand, Bhed. So basically, like Bhed is war, so we won't be using that. But dialogue, incentive, and punishment should be there. अभी पनिशमेंट की बात मत करो. वॉलेटाइल मॉब है, अंदर है. ऑलवेज Okay, रिमेंबर, मैंने स्टार्टिंग में क्लियर कर दिया. वॉलेटाइल मॉब, अगर आपके हॉस्पिटल स्टाफ के साथ पंगे हो गए और आपका स्टाफ ठीक नहीं है, तो आपका जो अभी तक बोल रहे थे ना कि एम्प्लॉय वेलफेयर पे बहुत काम करते हैं, वो कुछ नहीं है. Right. शुभांशी. So, on similar lines, what I've been said, like first ensuring the safety of the staff as well as the patients, and then moving on to the dialogue part, and then increasing the steps one by one, like in case the situation goes out of hand. ओके, गुड इनफ. आलोक. सर फर्स्ट तो ऑलरेडी मॉब अंदर है, तो जो भी कुछ सिक्योरिटी स्टाफ होगा कंपनी को उनको अलर्ट करने के बोल देंगे. सेकेंडली पुलिस को कॉल कर देंगे. उसके बाद इन द मेन टाइम हम जाके बात कर रहे होंगे, उनको परसुएट कर रहे होंगे, समझा रहे होंगे, उनको बता रहे होंगे इसके जो है लीगल रिपरकशन क्या हो सकते हैं. हमारी ऑलरेडी इंटीग्रिटी ये सब हमने बता दिया ऑलरेडी है, तो उनको बताएंगे कि हम हमेशा वर्क किए हैं इस पे. और सेकेंडली अगर अपॉइंट ओके सर. नहीं, कंटिन्यू. हाँ, और सर रिक्रूट हो रहे हैं बाय मेरिट, तो सर कुछ एलिजिबिलिटीज कंडीशंस होंगी, कैसे कैसे किया जा रहा है उनको भी समझाएंगे. उतना टाइम काफी होगा कि पुलिस आ जाए, उनको अच्छा, मानना होगा मानेंगे. एक बार ना सारे लोग एक बार बी पार्ट और पढ़ लो फटाफट, उसके बाद मैं आंसर दूंगा. So whosoever is going for the solutions na, that you have to answer in the B part, I guess. What could be the long term solution to the issue discussed in the case? जो A part में क्वेश्चन दिया हुआ है वो इमीडिएट सॉल्यूशन पूछा है, B part में लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन पूछा है. तो when you are going into the long term solution, it means वहां पे इशू हो रहा है. Yes, गोपाल. सर यहाँ पे पॉलिटिशियन को इंक्लूड कर सकते हैं, मतलब पॉलिटिकल पार्टी में मेंशन है तो कोई पार्टी नहीं, अब मैं यहाँ पे दो चीजें रोकूंगा. सेकेंड चीज, फर्स्ट मेरे को आलोक के टाइम पे बोलना चाहिए था, सॉरी मिस हो गया वो. ठीक है, व्हेन आलोक सेड दैट I will tell them what are the legal repercussions and all. They know what are the legal repercussions. That's why they are inside. Gate crashing and all, when they have performed all the illegal acts, so they are not there to be suppressed through the threats of what will happen to them. Okay, so that will again वो भड़क जाएंगे. Volatile situation और I will say volcanism हो जाएगा वहां पे. ठीक है, avoid करेंगे ये. ठीक है. Second, why do involve politicians? They are from a particular political party. आज तुमने इनको कर दिया एक्सेप्ट कि हाँ अपने बंदों को समझा लो, कल दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के करेंगे, फिर उनको बुला लेना, फिर हॉस्पिटल तो चल लिया, पॉलिटिक्स कर लेना. ठीक है. ओके, तो इन्वॉल्व अथॉरिटीज लाइक पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, सिक्योरिटी ऑफ स्टाफ, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन. ठीक है. ठीक है. सत्यम इन्वॉल्विंग द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, आज के बाद पुलिस के ठीक है. कोलैबोरेशन विद द एडमिनिस्ट्रेशन टू होल्ड एम्प्लॉयमेंट ड्राइव. ठीक है सत्यम, ठीक है, मैं सब समझ रहा हूँ, ये तो डिस्कस किया हुआ है ये शायद. कर्तव्य.
सर पहली बार जब मॉब घुसी तो उसने थ्रेड्स दिए, लैंग्वेज जो है उसने अच्छी नहीं यूज करी, तो सर जाहिर सी बात है कि सिचुएशन काफी मुद्दे पे आओ ना, करना क्या है? वॉलेटाइल है। तो सर सबसे मतलब यही होगा कि सबसे पहले उनसे बात करनी पड़ेगी बैठ के, और दूसरा जितना भी हम लोग का जो वहाँ पे काम करने वाला ठीक है, स्टाफ होगा मैं उनकी समझ गया, मैं समझ सिक्योरिटी गया। का ध्यान रखना ओके, पड़ेगा। रिपीट हो रहा है, सर वो मैं कंक्लूड करता हूँ, उसके बाद आएगा। ठीक है, अब ask the mob to submit individual application. No, I will not allow it, because had it been that कि वो individually deal करने आते तो एक एक करके आते हो, 40 में आए हैं, इसका मतलब individual application submit नहीं करेगा। apply your mind, आप उनकी यूनिटी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, किसी और तरीके से तोड़नी पड़ेगी। दिस विल नॉट वर्क। ओके, कनिक। सर मतलब एक पॉइंट था बट वो बैकफायर हो सकता है क्योंकि वॉलेटाइल है कि वी शुड इंश्योर दैट कि मेरिट से सिलेक्शन होता है बट लॉन्ग टर्म है ना, इंटेग्रिटी। वो लॉन्ग टर्म है, वो लॉन्ग टर्म है। ओके वो मैंने इसीलिए बी पार्ट पढ़वा दिया था। सुष्मिता, आई गेस सुष्मिता, नो, पुनीत, पुनीत, चलो मैं कंक्लूड कर रहा हूँ फिर। ओके, लेट मी कंक्लूड दिस। Sir, sorry, my mic was. ओके ओके, गो अहेड। Sir, because sir, the A part it says how to control the volatile situation and how to diffuse. Sir, सबसे पहले वो जो भी security staff available है उन्हें करेंगे कि at their with their available resources उनको counter करें, and second sir उसी time पे पुलिस को call करेंगे, and sir call our employees to remain silent and be patient, not to indulge in any kind of arguments with the mob, and sir try to and sir next level अगर उनमें से कुछ इन्फ्लुएंशियल पर्सन है जिनसे हम कुछ डायलॉग कर सके तो आई विल ट्राई। ओके, अब मुझे पिक्चर में आने दो क्योंकि आप लोग रिपीट कर रहे हैं, बड़ी पिक्चर में आप लोग जा नहीं रहे। हेलो सर। या सर बाकी सॉल्यूशंस तो ऑलमोस्ट सेम है, बस एक पॉइंट और ऐड करना था मुझे कि जो हम डायलॉग होगा हमारा मॉब के साथ में, क्या हम जो हॉस्पिटल की साइड से जो भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे उसमें जो ऑलरेडी वहाँ पे पर्सन्स काम कर रहे हैं तो उनको भी ले सकते हैं उस प्लेटफॉर्म पे, ताकि थोड़ा सा ज्यादा इम्पैक्ट बनेगा उन लोगों पे जो भी मॉब का पार्ट होंगे। ऑब्वियसली, गुड इनफ, गुड इनफ। सो यू केम टू द पॉइंट। ओके, लेट मी कंक्लूड। आप सबके पॉइंट्स में ना Yeah, I have one thing that I want to ask that whether that way is right or not. If we want to talk to these people and we also want to ensure safety, तो उनको एक तरीके से ट्रिक करना, like okay हम लोग तुम्हारी बात मानेंगे and then moving them out to a different place like within the hospital. नहीं जाएंगे वो, बिल्कुल नहीं जाएंगे, ठीक है। वो इसीलिए आए हैं ताकि वहां से हिलना ना पड़े। ओके, लेट मी कंक्लूड ओवर हियर। ओके, फर्स्ट थिंग, देखो मैं हमेशा पहली बात, फर्स्ट सेशन में वापस चल रहे हैं अपन लोग। whenever we have to think, मैंने बोला था स्टेक होल्डर सारे मेंशन नहीं है बट यहाँ पे हमें देखना है। तो व्हेन आई से हॉस्पिटल, अ मेजर कंपोनेंट इज द पेशेंट। तुम्हें स्टाफ की टेंशन की पड़ी है, तुम्हें ये नहीं लगा कि पेशेंट्स की भी सिक्योरिटी जरूरी है? डू यू थिंक whosoever is coming for the job wants to get into the way so that the patient may die or not? ठीक है, श्रीविद्या अभी कंक्लूड करना तो उसके बाद लूंगा पॉइंट्स, ठीक है। आई एम जस्ट टिंकरिंग द थॉट प्रोसेस कि पेशेंट्स के बारे में कोई नहीं सोच रहा। सो फर्स्ट, व्हेन यू आर सीईओ, इट्स नॉट ओनली अबाउट योर स्टाफ, इट्स अबाउट द पेशेंट्स एज वेल। Okay, it might be a case that the relatives of the patients and the caretakers are there as well. So first line should be security, not only staff but there as well. Second, when someone, I guess Smita or Subhanshu, whosoever it was talking about the tracking them. First thing, you भूल के जाते हो हिस्ट्री, वो भी इम्प्लाई करेगी ना इसमें। गांधी जी got arrested, many of our movements become leaderless. Remember Quit India movement? ठीक है, the 40% who is the leader, whom will you talk? You will ask as the CEO कि 40 बंदों को मेरे कमरे में भेज दो और 40 बंदे मिलके तोड़ेंगे आपको। Ask them to first unionize them, bring your leader,
I'll talk to them. Then India is a democratic country. Persuasion, nudging, that okay, you give your dharna, whatever it, in the peaceful manner. We have the staff as well. Okay, we will look into the future. We will discuss, we will deliberate volatile situation. At the same time, calling the police, because maintaining law and order is the jimmedari. But is it police only? No. District magistrate, sir, as well. Why? It is also about the sorry. It is also about what to say, employment and all. So police employment में तो कुछ नहीं करेगी. It might be a case that these 40% might be given employment somewhere else, or something else needed to be done. ठीक है? Am I clear how to control the recent situation within the premise, hospital premise? Okay, we are talking. We are not saying that you do not have genuine concern. Let me check if we have the vacancies. If not all the vacancies, we will try to create some whatever near future. Okay, but at the same time, merit will be there. A district magistrate आएगा. अब no one can stop district magistrate to come into the hospital. वो बहुत बड़ा इशू हो जाएगा उस पॉलिटिकल पार्टी के लिए भी. एक बार जब डीएम बन जाओगे ना, तो किसी पॉलिटिकल पार्टी में हिम्मत नहीं होगी आप लोगों को रोक लेगा कहीं पे आने से. So you called when you said district magistrate. When you ask district magistrate to come in, now you are having a round table talks. You have district administration at your table, indirectly at your side, because आपके कहने पे आ रहे हैं लोग, and you are in the wrong position. Okay, because of someone else. Now the political party, even they have to be on compromising situation. यहाँ तक अगर किसी को डाउट है तो आओ, वरना मैं फिर सेकंड पार्ट के लिए जाऊंगा. Am I clear? If clear, yes, GP. सर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तो बोला ना यहाँ पे, मतलब थोड़ा सा प्रैक्टिकल, मतलब बिकॉज इट सीम्स अ वेरी मतलब प्राइवेट एंड ना, तो इट्स नॉट अ मेजर पब्लिक इशू. तो कैन बी अच्छा, 700 लोग वहां पे एम्प्लॉय हैं, एन नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं. डोंट यू थिंक कि ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लिए इशू हो जाएगा? Is the any private entity comes out of purview of district magistrate? Do you even know chief medical officer under the district magistrate is well placed and well equipped, well trained enough to go and inspect any kind of hospital? The reason I have a very good knowledge of this district administration, don't worry, not guiding you otherwise. It has even the talks will get legitimized. It will have acceptance. I'm using two again ethical words to explain the situation. Legitimacy, acceptance in front of people. Those 40 people are not only a political party, they are individual as well. नेता वादा करके चला जाता है, लेकिन district magistrate if it is on table, it might be a case. GP, still any thoughts over it or clear? Clear, sir. Fine. Okay, now moving to the second situation, what could be the long-term solution to the issue discussed? Immediate solution, bring them on table, give them a space aside. करने के इसके बाद लूंगा, सारा एक साथ लूंगा, doubt. ठीक है? Bring them on a table, keep your hand raised only, I will say. Bring them on table, give them a particular space in the hospital where the operational part of hospital do not get affected. Make sure the security guards are present at the critical points, especially where the hospital staff is working for the patients. Okay, when make sure district administration involved, क्योंकि आप नहीं डीएम को फोन करोगे तो पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करेगा. Second thing, long-term solutions. If you accept that these 40 people will be given employment, this is nothing but a totally loss on your side. Okay. इट माइट बी केस की करना भी यही पड़े, बट एथिक्स में हम लिखते हैं वो है जो बहुत एक आइडियल सिचुएशन होती है. बहुत आइडियल सिचुएशन अब मैं आपको बना के दे रहा हूं. फर्स्ट थिंग, ओके, आई हैव दिस नंबर ऑफ वैकेंसीज, आस्किंग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वी हैव सिमिलर वैकेंसीज एट अदर प्लेसेस एज वेल. Asking 40 people what are the qualification and what kind of roles you are suitable for the hospital administration or hospitals. Okay, first step हो गया. अब यहीं पे आपने जब लेयरिंग कर दी ना, नॉट एवरीवन इज सुटेबल फॉर हॉस्पिटल रिलेटेड वर्क. सेकंड,
Okay, fine. So many of you are not suitable for hospital related work. Let me skill you. But me being a CEO, why should I invest in your skilling? So once question came, why district magistrate? He was so irrelevant over here. So now district magistrate का role. We have n number of schemes. I guess शायद कभी सुना हो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना. So can district magistrate arrange training of male nurses, female nurses, or compound or whatever it is, hospital related something, under one of its center and train the people, those who are not skilled enough? Can we have a district mapping where these 40, but not only these 40, but other people can be employed through those skilling center in different hospitals, even some out of district as well, with the coordination or different district magistrates? Ideal situation ही तो create करनी है. Now जॉब भी दे दी कुछ को जो मेरिट पे हैं, ठीक है, जो मेरिट पे नहीं है उनको स्किलिंग करा दिए. अब उनको मेरिट पे लेके आएंगे 6 महीने के कोर्स के बाद, उसमें भी कुछ फेल हो जाएंगे, चले जाएंगे. At the same time, when you involve the district administration, this job drive becomes a collaborative, participative, open. काफी सारे वर्ड्स यूज हो रहे हैं. Now I will stop over here. इतने पिक्चर मैंने क्लियर कर दिया. Yes, CR setup can be provided to the district administration. Okay, to support district administration in the skill and employment drive. Perfectly fine. ठीक है, इतना मैंने एक्सप्लेन कर दिया. Now you guys tell me और क्या हो सकता है लॉन्ग टर्म में. कनिक, क्वेश्चंस भी पूछ लेना जो बचाओ और बता भी देना. नहीं सर, उस टाइम में ऐसे मेरे को लगा आप ओपन कर रहे डिस्कशन के लिए, तो मैं अच्छा अच्छा रेज कर रहा हूं. तो सर क्या था कि या मे बी इसके डायमेंशंस है. मेरा तरफ से ये डायमेंशन होगा कि एज वी क्वेश्चन ने जो बोला है कि ये इंस्टांसेस पॉलिटिकल प्रेशर के काफी ज्यादा मतलब होने लगे रिसेंट इवेंट्स में. तो आई विल सजेस्ट कि अवेयरनेस क्रिएट करी जाए ताकि इन चीजों को मतलब दोबारा फ्यूचर में आके दोबारा 40 लोग आके जॉब ना मांगने लगे, हर बार ये गेम ना बनाया जाए. तो उस चीज को भी हमें मतलब लॉन्ग टर्म सोल्यूशन का पार्ट रखना चाहिए. फाइन इनफ, फाइन इनफ. सुभांशी. Sir, I actually had a doubt. Like, if we are considering this whole employment drive in the long term, then also we are trying to divide those people into skilled and unskilled. Will they agree with such a Subanchi, your solution if voice they is want? quite low, quite low. Hello, sir, is it better now? Yeah, better, better. Okay, sir, so when we are doing this whole employment drive, again we are separating the people into skilled and unskilled and then giving them job security. Will those people agree for such a solution when they have like covered the whole like mob occupation kind of thing and they want the jobs right and See, right? yeah, that's what I said, na, that I will create an ideal situation and you will get marks on the ideal situation as well. Ideal situation says yes, they knows कि हमें नौकरी इस वजह से नहीं मिल रही, अब हमको ये मिल रहा है करने को. That's why we will do it and that's why we will agree. Okay, so I know that there are n number of things. Okay, उसके लिए एक पार्ट अनएड्रेस्ड है, मैं चाहता हूं कोई बोले, बट अभी तक किसी ने बोला नहीं है. Those who are done, please lower your hand. Utkarsh. Sir, what could be the other long-term solutions? I think that we should assess the security risk as to how it was breached and future measures should be taken. Good And, enough. Good enough. That's what I missed voluntarily. Thank you. And one more I felt was like we should call a board members meet and appraise them of the situation of whatever happened. Good enough. At the same time, वो याद है कि we submitted a memorandum to district magistrate. Such situation should not occur in future, because if 40% are moving towards in different cars and all, what kind of local intelligence failure is with the district administration? It is not like that they are coming into the bike or something. Even if they are 40% are good enough person, they are mob. One more point is missing, I guess. So Utkarsh, if you are done, you can lower your hand. Okay, Kartavya.
सर मैं आपके सोल्यूशन सुन रहा था, तो उसके मतलब पॉइंट ऑफ व्यू ये मैंने देखा कि आप मतलब कहीं भी एक्सट्रीम में जाने से बच रहे थे। तो सर ये ही मतलब तरीके से हमको डील करना चाहिए कि ना तो हम बहुत बहुत ज्यादा सॉफ्ट साइड पे रहे और ना ही बहुत ज्यादा जो है एक्सट्रीम साइड पे रहे। जो एक मतलब आइडियल जो चीज हो बिल्कुल सकती है बिल्कुल उसी के इर्द गिर्द ही हमें सोचना चाहिए। exactly if you have to get the marks, this is the reason. And if you become SP, then सीधे लाठी चार्ज मार के 2-4 गोलियां बाहर देना, सही हो जाएगा सब। ठीक है आलोक। सर एक तुम लोग सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे थे, सब तो सही है, हमने टाइम बाय कर लिया, डीएम सर आ गया, सब हो गया। लेकिन सर 40 लोग अंदर घुसे हैं, सिक्योरिटी वैसे कर ली है, लॉ तोड़ा है उन्होंने कहीं ना कहीं, एफआईआर तो लॉन्च करनी चाहिए ना सर, कैसे छोड़ दें इसको? Good enough. So this is again केसेस हो another सकते part. थे। This was the another part that I missed. ओके। Okay, so और yes, सर एक I चीज guess पूछना था हाँ सर, डाउट था कि लाइक जब हम परसुएड कर रहे होंगे लीडर को, जब टाइम बाई या जो भी कर रहे होंगे उस टाइम पे, क्या हम इसको सोशल मीडिया पे स्ट्रीम कर सकते हैं कि एक प्रेशर पुट करने के लिए, जैसे पॉलिटिकल पार्टी से एफिलेटेड है, शायद कुछ हो जाए उससे? अब वो देखो, मैं आप एज ए सीईओ नहीं करोगे ना, ओके सर। आप अपनी सर सेकंड पार्ट। ओके। हाँ हाँ सर। बोलो। सर वो थर्ड पार्ट में जैसे जो है कि एवरी सोल्यूशन एक्शन हैव सम पॉजिटिव एंड नेगेटिव अभी इम्पैक्ट नहीं जा सर। रहे, अभी नहीं जा रहे, ओके। बात करूंगा उसका। ठीक है, सो अखिल, वट एवर यू हैव रिटन आई विल से द सेम इन सम डिफरेंट मैनर। एंड व्हाट इज इट? ओके, आई एम जस्ट कंक्लूडिंग। अगर इसके बाद किसी का कुछ पॉइंट हो तो कीप रेजिंग योर हैंड, आई विल जस्ट आस्क, कीप योर हैंड रेज, देन आई विल आस्क, एल्स लीव इट। ओके, सो क्योंकि वी हैव टू टेक अनदर केस स्टडी एज वेल एंड वी आर 1 hour ऑलरेडी। ओके, सो हाँ थे हम, हाँ जो पार्ट मैंने मिस किया था, rather than saying Sir, I have a police, point. yeah, Sir, along with giving more better security staff, as a CEO, we can also develop small training session to the staff to handle the mob, even in the absence of the CEO. If suppose on the day of let me conclude, ये सारे पॉइंट है मेरे पास, मतलब थोड़ा सा सोचा हुआ है मैंने भी ना। So whatever Akhil has written, I will just utilize whatever Shri Vidyan said. Like 2 things: requesting superintendent of police to give stern, strong warning to all the 40 peoples that this time whatever they were asking, the ends were not bad, intentions were not bad, but the means chosen by them were not good. मीन्स एंड गुड बैड सब समझ रहे हो, मैं यूज कर रहा हूँ एथिक्स यहाँ पे आपके, डियोंटोलॉजी जो रखना हो रख देना नाम अब इसका। ठीक है, नाउ गिविंग देम स्ट्रॉन्ग वार्निंग, एसपी वार्न करेगा, लीगल काउंसलिंग नहीं, वार्निंग, स्ट्रॉन्ग वार्निंग। इन फ्यूचर ऐसा कुछ होगा तो यू विल बी मेड अकाउंटेबल फॉर द सेम, पहली चीज। सेकेंड, requesting superintendent of police to train security guards which are not well equipped enough to deal with the mobs, and some of the hospital staff to deal with the situation. ओके, सो यहाँ पे भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का रोल, मतलब ये याद रखो, आप ब्यूरोक्रेसी के लिए जा रहे हैं, जहां ब्यूरोक्रेसी को जितना पॉजिटिव में रखेंगे उतना सिलेक्शन होने का चांस बढ़ जाता है केस स्टडी में। हमें क्लियर? यस अभिराज, अब इसके बाद इसमें कोई पॉइंट है तो बताओ, एल्स आई विल टेक द सी पॉइंट एंड विल मूव टू द नेक्स्ट केस स्टडी एज वेल। एक क्वेश्चन है हाँ कि हमने दोनों ही सिचुएशन में अभी तक इस चीज को एड्रेस नहीं किया है कि उनकी पॉलिटिकल अफिलिएशन अभी भी वो मेंटेन करना चाहते हैं, सो व्हाट वी वुड डू अबाउट दैट? यार सी पार्ट में एड्रेस करूंगा मैं उसको, ठीक है सर। पूछा ही नहीं है ना मेरे से, मेरिट डिमेरिट में बात करेंगे उसकी, जो चीज नहीं पूछी उसको मेरे को सी में दिख रहा है वो। नहीं, बट दैट इज वन ऑफ द इश्यूज ना, कि क्यों, हाँ क्योंकि हाँ वो मॉब बन के आए हैं, सो लाइक वी शुड एड्रेस दैट। हाँ, तो सी में करेंगे ना, सॉल्यूशन एक्शन क्या लिखोगे वरना उसमें। ठीक है सर। ठीक है, ओके कनिक। Sir, as in the question, it is specifically given, chosen not to unionize. So, can we say that unionizing can lessen the burden of this political pressure? सर्टेनली, ये भी सी में डील करता मैं। होल्ड ऑन योर क्वेश्चन सब।
अब सब कुछ सामने दिख रहा है तो तुम्हारे क्वेश्चंस नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं, तो नेक्स्ट लेवल शुरू किया जाएगा। ठीक है, फाइन। सो एवरी सॉल्यूशन action that you suggest will have a positive and a negative impact on you, the employees, performance of the employees. Analyze the consequences each of your suggested actions. So पहला एक्शन हमने कहा deliberation, discussion. In both the situation, अब किस पे क्या फर्क पड़ता है? CEO, अब CEO बात करेगा क्या? The people, those who are wanting to get jobs, want to get into the organization जहां पे already कुछ लोग पहले से काम कर रहे हैं. Had they been unionized, तो यहाँ से जो political affiliation वाले होते हैं, तो यहाँ पे union leader जो CEO को represent करता, मैं एक situation दे रहा हूँ, वहां पे voluntary और unionized नहीं किया ना, कंपनी कह के भी तो कर सकती है ऐसे सिचुएशंस को डील करने के लिए। अब ऑफ द रिकॉर्ड अगर यूनियनाइज कर दोगे तो ये भी गुंडागर्दी कर लेंगे थोड़ा बहुत। क्लियर? ठीक। सिमिलरली जब सेकंड सिचुएशन एम्प्लॉइज, उनमें ये भी हो जाएगा यार, द वे दे आर रिक्रूटिंग, आई डू नॉट नो व्हाट काइंड ऑफ इशू विल बी देयर। अगर ऐसे इनमें से ले आ गया तो यहाँ पे हॉस्पिटल में आके गुंडागर्दी मचाएंगे। गॉट इट? तो हॉस्पिटल में आके गुंडागर्दी वगैरह मचाना, वो वाला इशू है। दिस केस स्टडी वेरी लॉन्ग केस स्टडी, हाउ टू राइट इन अ वेरी सिंपल मैनर, दिस इज द टाइम टेस्टिंग। इसीलिए पहले कीवर्ड्स वाली बात कर ली है मैंने। अब मैं एक से ज्यादा पॉइंट भी लिख सकता हूं, लेकिन मुझे पता है कि एक्शंस मैंने 3-4 लिया हुआ, मैंने सब पे लिखा है, इसीलिए आई एम टेकिंग 1-on-1 पॉइंट ओनली। ठीक है। परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉइज, इस पे भी डिपेंड करेगा कि हाउ द न्यू एम्प्लॉइज एंड ऑल। ठीक है। तो अब डर भी बना रहेगा, उस डर को दूर करने के लिए सिक्योरिटी वाली बात हमने यूज किया, ये याद रखना। ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। नाउ जो हमने सेकंड लिया, डीएम वगैरह को इन्वॉल्व किया, जो बात पहले की थी कि हमें इसे मेंटेन करना है बाय एंश्योरिंग कि मेरिट बेस्ड होगा ये सब कुछ। ठीक है। थर्ड थिंग, जब हम डिस्कशन कर रहे हैं तो यहां पे क्लियर हम कर सकते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ पॉलिटिकल एफिलिएशन एंड ऑल। डीएम सर के सामने कैन वी एंश्योर कि पॉलिटिसाइजेशन कैन बी वन ऑफ क्लॉज टू फायर एनी पर्सन फ्रॉम द हॉस्पिटल, अगर आप अंदर आके पॉलिटिक्स करते हैं तो, बिकॉज सर्टेनली पॉलिटिक्स इज नॉट गुड फॉर द वर्क प्लेस until and unless you are working for the political organization. Now जब थर्ड स्टेप हमने जो एसपी सर के साथ लिया था, हमने ट्रेन वगैरह कर दिया है, आर वी क्रिएटिंग अ फियर काइंड ऑफ थिंग कि ऐसा दोबारा होता रहेगा? इवन पुलिस वालों का काम भी अब हमें करना पड़ेगा, और वी हैव टू एंश्योर काउंसलिंग एंड ऑल कि ये पॉजिटिव अप्रोच रखने के लिए। ठीक है। तो इस चीज को जो मैंने लास्ट में किया है, इसको नॉट मोर देन 1 लाइन आपको कहनी है ये चीजें सारी, तो ज्यादा एक्सप्लेनेशन मोड में मत जाना। 20 मार्क्स का है, क्योंकि दिस विल टेक अ गुड अमाउंट ऑफ योर पेपर। अगेन दिस 3-4 I will say steps that we have taken, and this way you will be dealing. Am I clear? अब केस स्टडी से रिलेटेड किसी को कुछ प्रॉब्लम है कि ये एफिलिएशन का नहीं किया, यूनियन का नहीं किया, या कुछ है तो बताओ, else we are moving to the next case study. That is very long case study, so we need at least 45 minutes for the same. If no doubt, just type no in the chat box so that we can move forward. Alok, सर इसमें ये तो बोला नहीं कि ऑप्शन आपके पास कौन कौन से ऑप्शन होंगे, सिर्फ इसमें सोल्यूशन की बात की है, तो जितना एक्सेल लेंगे बस उसी का पॉजिटिव नेगेटिव दिखाना है, कोई बाकी exactly. हाँ, जो मैंने लिया मैंने भी उन्हीं की बात की। Okay, fine. So moving to the next question. So one last thing in this question, pros cons type कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है। सुभांशी कुछ समझ में नहीं आया। I think your voice is breaking a lot. Internet का काफी issue है। So I'll type the question. Okay, fine. You just type, I will take it. I'm just reading the next question as well.
अगर छोटा तो लेट मी वेट, लेट मी चेक कोई वेटिंग रूम में भी बैठा ना हो। We do not need to show any pros and cons. No, not ask na. No need. Okay, so again a long case study. Please make sure कि long case study में मेरी approach क्या है, इसीलिए this is nothing but trying to show how to solve it live. Rajesh Sharma, an experienced as a senior bureaucrat, has been assigned the critical role of district collector in a drought-affected region in rural India. The region is currently grappling with a severe water scarcity, agriculture distress, social unrest. अब यहाँ पे मैं बात बताऊं, जैसे मैंने अभी वो पीडीएफ पढ़ी थी ना, तो अब मेरे लिए सोशल अनरेस्ट के साथ ही कुछ कीवर्ड्स अपने आप माइंड में घूम गए हैं। सोशल फैब्रिक, सोशल ऑर्डर, सोशल इंटेलिजेंस, सोशल इन्फ्लुएंस, वो सब आ जाएगा दिमाग में अपने आप। दैट्स हाउ माय माइंड वर्क्स, मेकिंग इट एन इमेंसली चैलेंजिंग environment. The bureaucratic procedure and limited resources further compound the difficulties in effectively addressing the present needs of affected population. ठीक है, अब मैंने सिर्फ bureaucratic procedure लग दिया, मतलब ये है ही नेगेटिव वर्ड, आगे का नेगेटिव ही लिखा होगा। Rajesh finds himself under the immense pressure, burdened with the responsibility of managing this crisis and urgently alleviating the emotional and practical difficulties faced by the community. इमोशनल, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड बात हो गई है मेरे लिए यहाँ पे। प्रैक्टिकल, जो चीज सामने दिख रही है। वाटर स्कार्सिटी poses a significant threat to the region's agricultural activities. अब अगर देखो तो यार यहाँ पे मेंशन है ना, तो वो एक्सप्लेन कर रहा है, इसमें ज्यादा दिमाग खराब नहीं करना अपना। Which are the primary source of livelihood, ये जरूर मेरे लिए हो गया इंपॉर्टेंट कुछ। For a large portion of population, the lack of adequate irrigation facilities, अब ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पे दिख रहा है ड्रॉट अफेक्टेड है, क्या इरिगेशन भी नहीं थी? हाँ नहीं थी। एंड डिप्लीटिंग ग्राउंड वाटर लेवल्स, ग्राउंड वाटर कर दिया बहुत है। लेड टू क्रॉप फेलियर, डिस्ट्रेस बोला है तो क्रॉप फेलियर मैं दिमाग में मान लूंगा, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है इसके लिए। सब्सटेंशियल फाइनेंशियल लॉसेस फॉर फार्मर्स, ठीक है। दिस सिचुएशन हैज फ्यूल्ड द डिस्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, नेगेटिव बट एथिक्स से रिलेटेड वर्ड्स, इन्हीं का उल्टा कर दो, केस सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। ग्रोइंग सेंस ऑफ होपलेसनेस among the farming community. In addition to the agriculture crisis, social unrest has emerged the consequence of deteriorating conditions. अब सब कुछ बुरा हो रहा है तो social unrest चलेगा अपना। Unemployment, increased migration and limited access to the basic amenities have contributed to growing dissatisfaction. क्यों किया? सब कुछ है लेकिन dissatisfaction, satisfaction मेरे लिए एक ethics का कीवर्ड है। Okay. Tension within the community. This unrest manifests through the protests, demonstrations, occasional clashes. अब मेरे को ये सब दिखेगा ना तो मैं सिर्फ इतना लिख दूंगा, LO. LO means law and order problems. Okay. Further straining the region's stability. Compounding the challenges are the bureaucratic procedures for the resources constraints that Rajesh encounters, lengthy administrative process. अब देखो ये फालतू की बात हुई है दोबारा, लिमिटेड फंडिंग ये है इशू, तो इसको सॉल्व करना होगा मुझे, इसलिए हैंडल है। ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप, जब भी ये चीज दिखेगी तो मेरे दिमाग में क्या आता है? इनोवेशन, ठीक है, आउट ऑफ बॉक्स। अब ये चीज अगर आपको थोड़ा सा भी मिशन दोज हो, अच्छा यहाँ पे मेन से जितने भी है ना, मिशन कर्मयोगी मत भूल जाना, केस स्टडी है एथिक्स में कहीं पे भी, तो वहां पे एक वर्ड आता है रोल बेस्ड बनना है हमें, किससे? जो अभी रूल बेस्ड है। तो ये चीज करने लोगों को, अब आई एम टेलिंग यू हाउ मेरे माइंड में अभी केस स्टडी सॉल्व होनी शुरू हो गई है। द टाइमली इंप्लीमेंटेशन ऑफ इफेक्टिव इंटरवेंशन, द लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग द वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। अब कोऑर्डिनेशन नहीं है, इसका मतलब लीडरशिप का क्वेश्चन आ गया डीएम साहब का, बोले तो हमारे राजेश जी का। लीडरशिप अपने आप में कीवर्ड है। लीडरशिप की कौन कौन सी वैल्यूज हैं?
एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी एनी वन ऑफ यू खाली बैठा हो, just go type officer like qualities या officer level qualities OLQ आर्म फोर्स SSB, 13-14 क्वालिटीज आ जाएंगी, वो याद कर लेना, एक बार देख लेना, यू विल बी एबल टू सॉल्व एन नंबर ऑफ केस स्टडीज एंड इंटरव्यू में तो सर्टेनली हेल्प करेगी। मैंने रटवाया था इस बार बच्चों को, ठीक है। अंडर दीज सर्कमस्टांसेस, sorry, among the various government departments exacerbates the difficulties in providing immediate relief and long term solution, मतलब दोनों ही उस पे बर्बाद हो रहे हैं हम, ठीक है। और टू द अफेक्टेड पॉपुलेशन, बेकार की बात है। अंडर दीज सर्कमस्टांसेस राजेश फाइंड्स हिमसेल्फ इन द पोजीशन ऑफ इमेंस रिस्पांसिबिलिटी, कीवर्ड है इसलिए अंडरलाइन कर लिया, एंड अकाउंटेबिलिटी, बात की है हमने अभी भी। The weight of expectations from the community, political pressure and the urgency to elevate the emotional practical difficulties faced by people create a highly stressful environment. Rajesh realizes the critical need for well-planned and empathetic approach to manage the crisis effectively, address the emotional well-being. बार-बार emotional side पे है, बोल रहे हैं, emotional intelligence बहुत रोल करेगा, social skills, social awareness, self management सब कुछ यूज होगा यहाँ पे। गोलमैन to manage the crisis effectively, address the emotional, ठीक है, हाँ, provide sustainable solutions। sustainable मतलब जो सतत, मतलब सस्टेनेबल रहें, ये नहीं कि 2 मिनट रहा सब कुछ ठीक रहा फिर 2 महीने बाद फिर वही सिचुएशंस। मिटिगेट द ऑनगोइंग चैलेंजेस। अब सस्टेनेबल सॉल्यूशन जब मैं बोलता हूँ ना, तो मेरे दिमाग में एक नॉर्मल ब्यूरोक्रेटिक माइंडसेट सोचने लगता है, यार एग्रीकल्चर का सस्टेनेबल सॉल्यूशन यही है कि लोगों को एग्री के अलावा भी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, जब तक नहीं होगा नहीं होगा। सेकंड थिंग, क्योंकि वहां पे अब क्रॉप फेलियर्स वगैरह भी है, वरना मेरे दिमाग में राइट रेमुनरेशन फॉर द प्रोड्यूस वो भी आता, ठीक है, बट क्रॉप फेलियर मेरे पास वहां पे वर्ड ध्यान है कि डिस्ट्रेस वगैरह है, तो दैट्स व्हाई अदर थिंग। द प्रॉब्लम एट द हैंड रिक्वायर राजेश टू नेविगेट थ्रू कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस, मोबिलाइज अवेलेबल रिसोर्सेज। अवेलेबल मींस यहाँ पे आपको क्रिएट भी करने पड़ेंगे, क्योंकि हमने बोला ना लिमिटेड फंडिंग। जब वहां पे क्या होता है, श्रीविद्या हैज जस्ट मेंशन्ड इन वन ऑफ द थिंग्स CSR, कम्युनिटी, ठीक है। CSR तो कंपनी से आ जाएगा, कम्युनिटी से भी रिसोर्स इकट्ठा कर सकते हैं। रिमेंबर पेम आर्मस्ट्रॉन्ग, 100 किलोमीटर ऑफ रोड विदाउट सिंगल पेनी फ्रॉम गवर्नमेंट, ठीक है। क्रिएट एन एनवायरनमेंट कंड्यूसिव टू द कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, सबका साथ सबका विकास फॉर एग्जांपल, एंड कोलैबोरेशन, कीवर्ड वही अंडरलाइन कर रहा हूं जो एथिक्स हैं। Additionally, he must find innovative ways to alleviate the emotional distress experienced by the affected population while ensuring the implementation of practical measures. अच्छा, एक चीज और बता देता हूँ, being a sportsman, whenever something related to emotional thing happens ना, then I start playing कि चलो can we organize some mela, fair, sports event for the youth? भारत पाकिस्तान डेली लड़ते हैं, लेकिन क्रिकेट मैच तो खेल ही लेते हैं। सोशल अनरेस्ट को वहां से भी कंट्रोल कर सकते हैं। आई एम जस्ट गिविंग यू फूड फॉर थॉट, पूरा केस नहीं सॉल्व कर रहा हूं मैं यहाँ पे। कैसे मेरे माइंड क्लिक होना शुरू होता है कि हाउ एम आई गुड एट द केस। ओके, नाउ बीइंग अ डीएम यू शुड नो डिपार्टमेंट, स्पोर्ट्स, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, डायरेक्टिंग स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट टू ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स मीट फॉर द डिस्ट्रिक्ट affected population while ensuring the implementation of practical measures to tackle the water scarcity and social unrest. ठीक है, ये पूरा केस। If you go to this last part of the case, again सब कुछ क्या है, बहुत short subject में। In summary, Rajesh Sharma as the district collector in a drought affected region in rural India is confronted with pressing challenges of severe water scarcity, agriculture distress, social unrest। जो ऊपर बातें थी हमने अंडरलाइन की थी वो रिपीट कर रहा है। The bureaucratic procedure, resources constraints further exacerbate the difficulties effectively addressing the needs for affected population. Under the immense pressure, Rajesh must manage this crisis efficiently, provide immediate relief। अब expectations पहले ही बता रहे हैं आपको, ठीक है, मैनेज हो जाए, immediate relief आ जाए, devise sustainable solution to alleviate emotional and practical hardship faced by the community। See,
It took almost 8 minutes to me to read this case study. ठीक है, why 8 minutes? I'm telling it took around 14 minutes. मैंने कुछ चीजें आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोली हैं यहाँ पे, वो मैं केस स्टडी अगर मैं खुद कर रहा होता तो आई वुड नॉट हैव सेड. ठीक है, फॉर एग्जांपल जब मैं यहाँ पे आपको बताने लगा कि लॉ एंड ऑर्डर लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, या इससे मेरा डीएम लीडरशिप कैसे इन्वॉल्व हो रहा है, या इससे क्या थॉट निकल रहा है मेरे दिमाग से, ठीक है, सो आई एंश्योर्ड कि वो सब भी हो इंक्लूड. तो 8 मिनट्स. नाउ आई हैव टू राइट 12 मिनट्स ओनली. ओके, एट मैक्सिमम आई विल से, और से 8 मिनट्स केस स्टडी के लिए. तो जितना पॉइंटर फॉर्मेट में लिखूंगा मैं इस केस स्टडी को, वो उतना बेटर रहेगा, क्योंकि मैंने पढ़ने में ज्यादा टाइम ले लिया है. ठीक है, हाउएवर हैड इट बीन दैट मेरे को एक्सप्लेन नहीं करना होता तो शायद मैं 5-6 मिनट में कर लेता, क्योंकि आई वुड हैव स्क्रिबल डायरेक्टली. दैट्स व्हाई आई हैव सेड इन द वेरी फर्स्ट सेशन कि it is more about how you read the case studies rather than how you write the case studies. ठीक है, यही केस स्टडी 5 मिनट में भी पढ़ी चली जाती मेरे से, अगर मैं इतना एक्सप्लेन नहीं करता आप लोगों को उस टाइम पे. ठीक है, एंड व्हाई आई जस्ट आई एम शोइंग अगेन द सेम केस स्टडी. द थिंग्स दैट यू हैव अंडरलाइंड और एनसर्कल्ड, रीड ओनली दोस वर्ड, यू विल गेट द केस स्टडी का जिस्ट अपने आप में. Fine, but at the same time, yaar, you have to ensure कि do these things on the question paper, not on your answer booklet. वरना पेज पलटते रह जाएंगे, अरे क्या लिखा, अरे वहां पे क्या लिखा था. तो case study, always try to solve through the question paper. Utilize it, scribble करो खूब उसके ऊपर. Now, till now, केस स्टडी को पढ़ने के तरीके में किसी को कोई इशू, कोई कुछ समस्या, या जो मैं सिखाना चाह रहा हूँ, इफ यू आर डन, just type yes. If you got any issue, just raise your hand, because else we will be solving the case. Okay, yes, Srividya. Sir, in such lengthy case studies, can we first read the questions, what they are asking, and then go back to the first para, sir? Okay, so I would have started this way, but since you have asked the question, I'll say read only first 2 questions. Okay, not all the questions, only first 2-3 questions, because if you read all the questions, you will not be remembering all the questions. Fine, that's why play smartly, but be very smart at the same time. 1-2 questions you can remember, then you go back to case study like a normal case study. Okay, sir. Fine, because if you suppose had it been 4 or 5 as well, if you cannot incorporate, you cannot remember, then what is the need to do this? Okay, so 1-2 more than enough. Don't go for the third. In the face of bureaucratic red tape, lengthy administrative process, what strategies can Rajesh Sharma implement to streamline decision making, ensure the timely implementation of interventions aimed at alleviating emotional practical difficulty faced by the community? What strategies? I would like to open this question for you guys. अब participate करने को बोल रहा हूँ, just raise your hand and participate. Yes, Abhiraj. Proactively moving to like being proactive, first of all, that we have to do that. Or then like try to find out the, like, what are the loopholes that the issue is pertaining continuously. You have to mention directly the loopholes. You cannot write that Rajesh should find the loopholes. Rajesh should work on the following loopholes. That will be the difference between a normal person and a person getting good marks. A person will write finding out the loopholes. A good person who is getting the marks will write working on the following loopholes. First, economic failures, economic distress due to crop failure, creating more economic opportunities. How? अब वो सोचना है. Yes, एक sir. एग्जांपल दे दो, श्रीविद्या.
Sir, in order to avoid the bureaucratic red tapeism, one, we can start the systems making it online, and second, since there is emotional distress, involve the women participation, because there is also increase in migration, ongoing migration, sir. That means usually females will be present in that area. So for that, utilize the local panchayats to increase their participation and get better feedback. Okay. And So sir, yeah. in for the agriculture distress, since there is a drought, it is a drought prone area. We can give them ideas for cultivation of millets also, sir. Can you please mention that the what we call millet? So Sri Anna, sir. Hey, you always miss the same, huh? Bad habit of yours. Okay, so renewable energy, PM Kusum, I will say, Katyani, the reason I will say groundwater depletion, you remember? Okay, so देखो, now see the question, bureaucratic red tape, lengthy administrative process, what strategies can take Rajesh Sharma to streamline decision making? First thing, always remember technology. Utilizing technology for the communication. First thing, what you have to do, first you should know that, then you utilize the technology for the same. अब इंटरवेंशन क्या क्या लेने हैं, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ. So one, I got millets, non water intensive crops. टेक्नोलॉजी में आधार वेरिफिकेशन इन्वॉल्व ग्राम पंचायत सोशल ऑर्डर. अरे तो हेयर तो वी हैव टू बेनिफिट एवरीवन ना. अभी ये सब करना क्या, हमें इंटरवेंशन क्या लेने हैं? आई एम नॉट गेटिंग योर पॉइंट उत्कर्ष. Good enough. Since reforms in agri, you have to be sustainable solutions ना, that's why reforms in agri में headline डालूंगा, non water intensive, then precision agriculture, irrigation facilities नहीं है. Can I ask my irrigation departments? अरे डीएम लिंकिंग इंटरलिंकिंग रिवर्स के लिए प्रपोजल भेजेगा, बस करेगा नहीं. Okay, now other than economic activities, तो यहाँ पे अभी आपको डिस्ट्रिक्ट के बारे में नहीं पता. वाटर हार्वेस्टिंग, वेरी गुड, कर्तव्य. पुनीत माइक्रो इरिगेशन, लोकल इरिगेशन, प्रिसिजन इरिगेशन में आ गया है. ठीक है. ओके, तो ये नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में सोचिए ना. तो एज ए डीएम आस्किंग टीम to do a skill gap analysis. What kind of skills are available in districts? What kind of jobs are available in district? Can district be created into hub of something? SHG, किसी को concept पता है? Self-help group. Can these self-help group led economic activities can be activated within the districts? Can district manufacture certain things which can be sold to the nearby district? Yes, Kartav. सर वही मेरा वाला पॉइंट आपने पूरा करा. जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का आजकल बड़ा चल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, तो वही चीज आप बता रहे. ठीक है. तो अदर देन, तो इकोनॉमिक साइड ऐसे एड्रेस करना है. बेसिकली हमें काम करना था, अगर आप समरी में भी देखो, वाटर स्कार्सिटी हमने हार्वेस्टिंग पे शुरू किया, जो है रिसोर्स उसको ऑप्टिमाइज तरीके से, प्रिसीजन एंड ऑल, नॉन वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स एंड ऑल. ठीक है. फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज इन एग्रीकल्चर, अभी तो डिस्ट्रेस में है ना, तो
क्या लिंक करेंगे? This is not so. Cottage industries, Puneet, we do not know whether district is supportive or not. So as a district magistrate, you can identify what kind of economic activities can be pursued. For example, whether you can write like this. For example, if district is good in cottage or not. If district can pursue cottage industries, leather ball industry, whatever it is. Kanik. Sir, regarding the emotional angle of अभी the आएंगे, difficulty. अभी आएंगे. अच्छा, अब बोलो, बोलो. बोलो तो सही है अब. अच्छा सर, इमोशनल एंगल से मैं पूछना चाह रहा था कि अगर सर सोशल मीडिया कैंपेन्स, मतलब आपने पहले एक बार मना किया था एज अ डीएम सोशल मीडिया का यूज नहीं करना है, वो नेगेटिव इमोशन था ना, वो नेगेटिव था ना, वहां पे लड़ाई बड़ाई हो रही है. अच्छा अच्छा, तो यहाँ कर सकते सोशल मीडिया कैंपेन लाइक सेविंग वाटर, जो वेल ऑफ हाँ, आस्किंग देम टू. क्या दिक्कत है? हाँ सर, ठीक है, फाइन. सो नाउ देयर इज अ इमोशनल एंगल एज वेल. सोशल अनरेस्ट को नहीं एड्रेस कर रहे यार. Sir, to handle Yes, one by one. Who was it? Shividya. sir, to handle the social distress, we can train the people with the new age skills by conducting the training campaigns. वो ट्रेनिंग हर जगह रहेगा. सी जो सबसे बेकार चीज हो रही है इंडिया में, उसको हर जगह लिखना जरूर है, ट्रेनिंग. ठीक है. यस कनिक, गुड इनफ. रोल ऑफ नुक्कड़ नाटक टू क्रिएट अवेयरनेस एंड क्रिएट, मतलब सोसाइटी में एक यूनिटी क्रिएट करना कि हाँ ये इशू सब फेस कर रहे हैं, तो हाँ वी विल यार मेरे को अब मुझे गुस्सा आ रहा है. लेट मी वेंट इट आउट. आई सेड दैट व्हेनेवर द सोशल अनरेस्ट वर्ड इज देयर, social fabric, social order, then still I'm getting the word like unity and all. Say fraternity as well. I'm not getting the keywords na. Abhi to bola maine. Still a good word from the Satyam side, confidence building among the youth, role model, okay, involvement of local leader along with the administration for assurance of the basic service, community participation approach he is adopting. That's how you will be managing emotions as well. Management of particular crisis was one of the reason. वो कहते हैं ना कि कितने मुश्किल चीज है तब तक पता नहीं लगता जब आप करके ना देखो. वो लोग बोलते हैं यूपीएससी एक अटेम्प्ट दिलवा दो, रो देते हैं. सिमिलरली पीपल विल क्लेम दैट डीएम करके आ रहा है, डीएम करके आ रहा है. ओके, आई एम क्रिएटिंग मोहल्ला कमिटीज फॉर द इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर टैंकर्स विल बी देयर, वाटर कमिटीज विल बी देयर. नोट कर लो ना. अब कीवर्ड बोल रहा हूँ तो मुझे तो किसी की शक्ल भी तो नहीं दिखती कि मतलब मुझे समझ में नहीं आता आप लोग नोट कर रहे हैं कि नहीं. Okay, so for social unrest is due to economic scarcity, I will say. Okay, मतलब economic activities ठीक नहीं है, पहले तो इस पे वर्क करना है. Second, once there is a social unrest, people try to do it for fun as well. So law and order का issue भी देखना है. Now, how to secure good marks? Now मैं structure की बात कर रहा हूँ. आपको solution सारे पता है. You will say water harvesting, but how I will write? DM as a DM. Yeah, DM will be directing irrigation department to enhance, to work on water harvesting. DM will direct superintendent of police to ensure police patrolling in sensitive areas. Are you guys able to get what I wanted to convey in the last 2 minutes? I will say कि DM का रोल कैसे दिखाना है आपको. DM will not do everything. DM will direct. अरे कुछ यस नो कुछ तो लिख के छोड़ दिया करो, मुझे एक तो पता नहीं लग रहा कि आप सो रहे हो. यस फाइन, ठीक है सर. मतलब डीएम को
मेन पिक्चर में रख के और बाकी सारी चीजों की तरफ हम लोग को मूव करना चाहिए, मतलब मुझे तो ये डिस्ट्रिक्ट लगता कलेक्टर ही बनाया ना है। आपको? हाँ वही चीज। जब डिपार्टमेंट हेड था तो मैं उसकी तरह सोच रहा था, अभी मैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हूँ तो मेरे पास डिपार्टमेंट है या हर जगह डीएम ही कुछ सब कुछ करेगा? नहीं करेगा ना। ensuring that no rumors are spreading, हाँ लिख सकते हैं, लेकिन इतना कुछ साफ लिखने को, ये आसपास का पॉइंट लिखने का टाइम ही नहीं मिलेगा। ओके, यू हैव मैनी टू द पॉइंट्स दैट टू बी रिटन। मैंने सारे ऑलमोस्ट डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। अब सोशल अनरेस्ट की बात कर ली है मैंने, डीएम का रिप्रेजेंटेशन कैसे है वो भी कर लिया मैंने। सोशल अनरेस्ट कम इमोशनल वेलबींग। इमोशनल वेलबींग के लिए अपार्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स मीट और बताओ क्या करेंगे? डीएम डायरेक्टिंग स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट टू कंडक्ट स्पोर्ट्स मीटअप, स्पोर्ट्स चैलेंजेस, ओके, स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स। इसके अलावा क्या इमोशनल की साइड के लिए? तो जो आईसीडीएस के आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, उनका रोल दिखा सकते हैं, जो मतलब गुड, वेरी न्यूनेटल गुड, और पोस्टनेटल वाली चीज के लिए, एंड आल्सो यंग चिल्ड्रन। वेरी गुड, ठीक है। इमोशनल वेलबींग हो गया, ठीक है। श्रीविद्या? Sir, utilizing the self-help groups to develop the local art and culture so that वो their हो गया, emotional वो हो गया ना। कुछ नया इमोशनल की साइड से बोलो अब, जो डायरेक्ट इमोशनल पे हिट करे, क्योंकि सेल्फ हेल्प ग्रुप को हमने इकोनॉमिक सपोर्ट में ले लिया। नुक्कड़ नाटक हो चुका है। डीएम शोइंग स्कोप ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज टू यूथ हिज ओन लाइफ एग्जांपल। क्राइसिस सिचुएशन है, डीएम विल बी नॉट बी इन दैट मच फ्री मोड कि मैं ये सब करूं, बट रोल मॉडल वाला पॉइंट किसी ने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। sir, give them voice to express their grievances through utilizing the panchayat system, sir. So, because they are emotionally very distressed, they need some voice to come out. So panchayats can be gram sabhas, and panchayats can be the platform where they can express their grievances. नहीं, अभी अवॉइड नॉट रिक्वायर्ड हियर। सर जो इमोशनल वाला पार्ट है उसको हम लोग ऐसे अलग अलग पेज पे डिवाइड करके एक चार्ट बना सकते हैं छोटा सा, ठीक। जैसे अभी वुमेन वाला बताया, उसके लिए मैंने ये आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स का बताया। वैसे जो एल्डरली वाले हैं उनके लिए ऐसे कॉमन मीटिंग्स रख सकते हैं, मतलब मीटअप्स। गुड, चौपाल्स फॉर एग्जांपल, यू कैन से चौपाल्स सिंस इट इज अ रूरल बैकग्राउंड। एंड सो गुड, जो स्कूल्स है उसमें एनुअल फंक्शंस वगैरह करवाना, तो उससे सोशल इमोशनल वेलबींग भी अच्छा होगा। एंड जैसे नेशनल फेस्टिवल्स के टाइम पे करवाते हैं तो उससे बहुत सारी चीजें, पेट्रियोटिज्म भी डेवलप होगा, मतलब मल्टीपल चीजें डेवलप होंगी इससे। फाइन, गुड इनफ। ये बच्चे हो गए, वुमेन हो गए, एल्डरली हो गया। अब जो यूथ है उनके लिए भी इस तरह का कुछ सोल्यूशन हो सकते हैं। गुड इनफ, ठीक है। कनिक? सर, रोल ऑफ योगा और इमोशनल डिस्ट्रेस और मेंटल हेल्थ के लिए हेल्प करेगा। गुड, फाइनली किसी का बल्ब जला। मेंटल हेल्थ इसीलिए स्टार्टिंग में बोला था मैंने, किसी ने वर्ड यूज किया सेम टू। गुड इनफ। डीसी कैन आस्क एनी लोकल पर्सनैलिटी, गुड इनफ कर्तव्य, इवन दैट इज गुड। लेकिन ये मैं कहूंगा साइड वाइज वाली पॉइंट्स हैं, ठीक है। नाउ आई विल बी गिविंग जो हमारे पास लोकली रिसोर्स अवेलेबल है। डू वी हैव साइकोलॉजी प्रोफेसर, सोशियोलॉजिस्ट इन द डिस्ट्रिक्ट टू वर्क ऑन द इशू? ठीक है, क्या करना है उनसे भी एक्सपर्ट ओपिनियंस ले लेते हैं ना। डीएम को सब कुछ थोड़ी पता है। डीएम इज द पर्सन जिसे काम करवाना होता है, ही इज द एडमिनिस्ट्रेटर, ही इज नॉट सुपरमैन और बैटमैन, ठीक है। तो मेरे पास क्या कौन सा डिपार्टमेंट है? अच्छा, यहाँ पे ऐसा करता हूँ, सोशियोलॉजिस्ट को बोल देता हूँ हैव अ काउंसलिंग विद द फीमेल वॉलंटियर्स। ओके फाइन, ओके। डू वी हैव एनजीओस अवेलेबल इन आवर डिस्ट्रिक्ट वर्किंग ऑन द मेंटल हेल्थ? यूटिलाइज देयर वॉलंटियर वर्कफोर्स, ओके। आस्किंग देम टू हैव कम इनटू द ग्राम पंचायत मीटिंग्स। अब वहां से उठा के ला रहा हूँ, जब मैंने किसी का बोला था नहीं वर्क करेगा, क्योंकि मैंने अब इसको पोजीशन ही दूसरी दे दी है, ओके। सो गोइंग अप फर्दर, considering the high levels of stress, emotional distress about the affected, how can emotional intelligence be leveraged to enhance the resilience, empathy, managing the crisis?
ठीक है, अब रेजिलियंस स्पोर्ट्स मीटअप वाला एग्जांपल आप यहाँ पे, मतलब केस सॉल्व हो चुका है, मैं उसको इसमें कैसे डाल रहे हैं वो बता रहा हूँ। ठीक है, एम्पैथी व्हेन सोशियोलॉजिस्ट एंड ऑल आप जैसे ब्रिंग कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग एफिशिएंसी, वाटर कमिटीज एंड ऑल, डू रिमेंबर? यस सर। फाइन। ठीक, जो जो हमने डिस्कस किया है वो सब इन हेडिंग्स के नीचे आएगा। अब what specific measure can be taken to support emotional well-being, both bureaucratic team and the community team, ये सब हमने कर ही दिया है, ऑलमोस्ट सब डिस्कस। ठीक है, विद दिस आई कंक्लूड द केस स्टडी फ्रॉम माय साइड। एक चीज छोड़ रखी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू गाइस गॉट एनी क्वेश्चन डू लेट मी नो। ठीक है, इसके अलावा इन पॉइंट्स के अलावा कुछ दिमाग में आ रहा हो तो वो दैट वी कैन डिस्कस, एल्स लास्ट में एक पॉइंट बोलूंगा बस। यस, कर्तव्य। सर हमने जो दो केस स्टडीज पढ़ी उसमें सर हमने इंट्रोडक्शन दोनों में छोड़ दिया। हाँ, आज मैंने डिस्कस नहीं किया, मतलब क्योंकि वो भी जाना चाहिए ना इन दोनों के साथ ही। एग्जैक्टली इंट्रोडक्शन कंक्लूजन मैंने आज किसी में नहीं डिस्कस किया। आज मैंने सिर्फ कीवर्ड से केस स्टडी बॉडी कैसे पार्ट करना है उस पर डिस्कस किया था। डू रिमेंबर प्रीवियस सेशन में मैंने इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन पे ज्यादा ध्यान दिया था, बॉडी पे कम। ठीक है। तो इट डजंट मीन कि आज इंट्रोडक्शन कंक्लूजन नहीं डिस्कस किया तो लिखना नहीं है। ठीक है, वो अभी लास्ट में थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर ब्रिंगिंग स्पॉटलाइट ऑन इट, क्योंकि मेरा पर्पस यही था कि आज बॉडी पे हमारा फोकस रखना है। नेक्स्ट सेशन में मेरा फोकस रहेगा बॉडी के साथ साथ थिंकर्स कैसे इंक्लूड करने हैं। सुभांशी। सर जैसे सेकंड वाली केस स्टडी थी, इसमें बहुत ही ज्यादा डायमेंशंस कवर की हुई थी इनके सॉल्यूशन में। जो स्पेसिफिक पूछा है बस उसकी हेडिंग बना के बस वही है, फिर और जो हमारे दिमाग में और चीजें आ रही है वो सोशल अनरेस्ट के बाद कुछ बहुत और चीजें थी जो दिख रही थी, वो सब भी दिख रही है या फिर बस जो क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा है। देखो, जो डायरेक्टली पूछा वो तो 110% एड्रेस करना है। जो आसपास की चीजें, इफ यू वांट टू राइट, डोंट राइट मोर देन 1 or 2 पॉइंट्स, बिकॉज अगर उस एग्जामिनर ने समझ लिया नहीं इसका तो यहाँ भी दिमाग चल गया तो वो समझ जाएगा इसका और भी दिमाग चल सकता है। सपोज उसको बुरा लग गया तो 1-2 पॉइंट पे नंबर तो नहीं काटेगा, लेकिन आप अगर उसे भरी दोगे उससे, मतलब जो पूछा गया उसको स्पेस कम मिला और जो नहीं पूछा गया उसको स्पेस ज्यादा मिल गया, तो दैट इज नॉट अ राइट स्ट्रेटेजी टू। सर तो ऐसा कर सकते हैं कि तीनों जो पार्ट से आंसर करने के बाद फिर एक से वर्कफ्लो टाइप बनाते हैं और जो प्रॉब्लम्स है उसका 2-3-4 लिखते हैं। गुड, ये चलेगा। ठीक है, ओके। यस कनिक। सर जैसे ये काफी डायनामिक सी केस स्टडीज आपने 2 डिस्कस कर लिया, तो इनमें जैसे 3 क्वेश्चंस आए हैं और टोटल 20 मार्क्स के है, तो क्या मतलब ये कैसे गेज करना है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स और स्पेसिंग रख लूं या साइड में कुछ रखना होता है क्या? देखो, वो तुम्हें देख के पता चल जाता है। ये जो क्वेश्चन है इसमें मैं कहूंगा 5 मार्क्स हैं, ठीक है, और इन दोनों में मेरे हिसाब से 7.5 मार्क्स है। रीजन इसमें डायरेक्ट मेजर है और यूपीएससी वाले जनरली करके दे देते हैं ब्रेकअप भी कई बार। ठीक है, नीड नॉट टू वरी ओवर इट। तो क्वेश्चन का लेंथ से पता लग जाएगा कि किसमें कितना लिखना है, उस हिसाब से उसको रिस्पेक्ट देनी है। मैंने भी इन दोनों पॉइंट्स पे ज्यादा फोकस किया, इस पे डायरेक्ट पॉइंटर्स पे आ गया था ना, रीजन ही यही था। यस सर। ठीक है, नो मोर क्वेश्चंस। ठीक है, तो लास्ट जो चीज मुझे इसमें मेंशन करनी थी, इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन में इसमें क्या समझ में आ रहा है, क्या लिख सकते हैं? मेरा यही रहेगा मानना कि हाउ एग्रीकल्चर, या सिर्फ इतना लिख दूंगा, एग्रीकल्चर एक्ट्स एज इकोनॉमिक बैकबोन फॉर रूरल इंडिया। In the above case study, it shows if agriculture is affected, then the things can lead to the social unrest as well. खत्म। आइडियली मैं एक लाइन पे खत्म भी कर सकता हूं इसको। कंक्लूजन में we have n number of things.
ओके जितनी गवर्नमेंट की स्कीम्स है सब इसमें इस्तेमाल हो सकती हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड। हाँ गुड गवर्नेंस यूडीपी का अब परफेक्टली फाइन यूज कर सकते हैं हम इसमें। ठीक है आप ये दिखा सकते हो कि हाउ इवन अ प्राइवेट एंटिटी इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। ठीक है इंट्रोडक्शन में। कंक्लूजन में व्हाट यू कैन सजेस्ट दैट हाउ सीईओ शोज लीडरशिप वैल्यूज, एक ये हो सकता है, या कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच पूरी रही है केस स्टडी की। ठीक है मल्टी स्टेक होल्डरशिप एंड ऑल, कैसे ट्रस्ट बनाया। तो उन टाइप के कीवर्ड्स पकड़ के कंक्लूजन आप कंक्लूड कर सकते हैं। हमें क्लियर? अब किसी का कुछ डाउट है तो लेट मी नो एल्स आई विल जस्ट से एंड टू द मीटिंग। यस कर्तव्य। सर वो की वर्ड्स को न्यूज़पेपर के साथ कनेक्ट करने के लिए आपने कहा था लास्ट में पूछने के लिए, तो उसके लिए मैं पूछना चाह रहा था। ठीक है कीवर्ड्स को न्यूज़पेपर से कैसे निकालना है, करेक्ट? यस ओके सो यार हमेशा दो चीजें याद रखना। दिस इज आई विल से लास्ट 5 minutes or something of this session is of very important nature. Whenever you are reading ethics or any GS, you should be having your syllabus in your hand. When you read the news, whether you are able to understand कि ये न्यूज किस सिलेबस के पार्ट से कनेक्ट हो रही है। फॉर एग्जाम्पल if there is a news about the technology transfer of some critical importance, say nuclear technology transfer, for me it becomes ethical orientation by looking at from the perspective of a trust from the provider. If the India is transferring the nuclear technology suppose to Bhutan, the kind of trust India puts that कि ये किसी को लीक नहीं करेगा बिना हमसे पूछे। I relate. Sometimes you will find कि न्यूज में चंद्रयान आया, सक्सेसफुल रहा। Okay, whether you are able to relate it with the perseverance. Remember the previous picture, our prime minister patting the back of then chairman. Perseverance, not giving up in the case of failures. तो इस तरीके से अगर माइंडसेट वर्क करेगा न्यूज़पेपर पढ़ते हुए along with the syllabus, that's how it is going to help you. Clear? Okay, fine. So with this, I say goodbye to all of you.